all respected deans, directors, head of departments, and my dear faculty members. Yesterday, we had a very successful seminar on Education Policy 2020. And various topics were covered in that seminar. But it was a seminar organized by Mewar University, but in collaboration with Bharatiya Shikshan Mandal. You all are in the education, in the teaching profession, and it is my foremost duty to tell you everything about higher education policy, and it is your duty also to understand it properly. First of all, we must understand what is provided in higher education policy. Thereafter, we can participate in various discussions which are being made according to their understanding and their attitude. But first of all, we should know what is exactly mentioned in higher education policy. So, my dear friends, without wasting much of time, I straightway come to the higher education policy part 2, which is relating to higher education. The vision of this education policy relating to higher education is clearly defined in these 5 points. First is multidisciplinary colleges and university in each district of our country. Colleges will be autonomous, degree awarding institutions which can be converted into universities through graded development. The colleges, right now, like Maharana Pratap PG College, Chittorgarh, it is a college, but it will be converted into university with two things: multidisciplinary subjects, number 1, and number 2, the graded development. For example, that college has a NAC A, then there will be NAC A plus, then there will be further more upgradation, and then it will be converted into university. It will be then degree awarding university. As already I said, unitary colleges will be closed. Establishment of NRF, National Research Foundation. National Research Foundation will be established. I will deal it in detail what NRF will do. Light but tight regulation by single regulator. Now NCT is also coming for inspection. Pharmacy Council is also coming for inspection. UGC is also coming for inspection. AICT is also coming for inspection. That type of activity will be closed. Single regulator, simplification, but tight regulation. I will deal the subject in detail after some time. Then what are the features of new education policy? In this new education policy, university means a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and postgraduate programs with high quality research and community engagement. There will be 2 types of universities. First, research intensive university. Those universities will emphasis on research and teaching both, but their main emphasis will be on research. Second type of universities will be teaching intensive universities. They will be focused more on teaching, but they will also do some research. Research is in both the universities, research will take place. Research will be there. But in research intensive universities,
the main emphasis will be on research. By 2040, all colleges and universities will be multidisciplinary and their strength will be minimum 3,000 students in each institution. I think it is clear to all. It is also planned that gross enrollment ratio will be 50% by 2035. Right now it is somewhere between 10 to 11%. You just imagine that in higher education institutions, how many students will be more enrolled. It is planned to establish outstanding public institutions in large numbers in country. They will act as a model colleges and universities. If you want to understand it, take the simple example of central universities. Almost in every state, there are now central universities and the state universities. The intention of the government is that the central universities and the state universities and like NITs and IIMs, IITs, they will be a model institution. Model institutions like Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. The affiliating character will be finished. That will be a university, multidisciplinary university, and it will be a model university to follow by all surrounding colleges and universities. This is the intention of the government. Gradually, by 15 years, affiliating universities will be closed. They will be converted into multidisciplinary universities, as I said earlier. The multidisciplinary universities will have academic, technical, professional and vocational education in one place so that the students can choose subject of his or her choice. Now there will not be a separate ITIs or polytechnics. Within the university, and therefore Kaji Sahab, I was telling you that we should have ITI also in our campus, polytechnic we have, and we should have everything in our campus. Because gradually when this new higher education policy will be implemented, we will be required to do all these things, so we should start it from now. Means all type of education and vocational education will be at one place, and the minimum strength of that college or that university will be 3,000. All HEIs, HEI means higher education institutions, will focus on research and innovation by setting up startups, incubation centers, technology development centers, establish industry academic linkage, interdisciplinary research in the area of social issues, public health, along with production, agriculture, law, social sciences and humanities. All higher education institutions will focus on research and local area research. I am emphasizing on this word that our all research department should look this, that we have to focus on local area research. We should address the local area problem by doing small or big research. We should have collaboration with the industries working nearby our universities and do some research. Recently, our Pro Vice Chancellor Harish Gurnani ji has taken a further step on this. Very soon we are going to do a research along with Hindustan Zinc, a local area research. Similarly, we should do with some cement industries and some textile industries.
and we should establish the linkage like this, that we should address the local area problems and local area problems of the industry, especially with respect to environment, health, safety, and all these things. These should we must do, because it is provided in our policy. Then, as I said yesterday, what outcome they want to achieve. That what outcome they want to achieve from this higher education policy, the input of this higher education policy is the obviously input and output is the student, the young generation. So what is it? After doing all these things, our product, how it should be, what should be the quality of our product, that he or she should have a critical and imaginative thinking in the area of science, technology, humanities, commerce, vocational education of his or her choice. One should have problem solving ability. One should have communication skills and teamwork attitude. One should be socially and morally aware about ethical behavior and practice. And one should be innovative by approach and research oriented. These are the 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Now, how many points we are covering right now without implementing this higher education policy? What we are doing, what we are saying, we are already covering. Let us take one by one. Critical imaginative thinking in the area of science, technology, humanities, commerce, vocational education of his her choice. Our every curriculum, every course is inbuilt the compulsory internship and compulsory training, so that along with the academic knowledge, we should have a knowledge of vocational education, commerce, and what we are doing, one should have problem solving ability. What we are doing for problem solving ability? We are making them role model. We are giving them chart, we are giving them presentation, we are giving them an assignment. And we are organizing the tech fest. We are doing the science fair. We are telling them to prepare the project. All these things are covered in problem solving ability. Then one should have communication skills and teamwork attitude. Communication skills. Presentation is the integral part of our teaching. When a student, before his friends, peer group, give presentation on a particular subject before his teachers, then his or her communication skill automatically improve. And this is the essential part. Now, those who are not taking this presentation seriously, please start taking, because it is the integral part of your day-to-day teaching. His or her communication skill should be perfect. No matter he speak in English or in Hindi, but whatever he speak, it should be impressive. It should communicate the proper sense which he want to communicate. One should be innovative by approach and research oriented. We are taking projects. At the time of final, when we complete the internship,
we take the project, we take final interview, viva, that what you have learned in 6 months, what new thing you have done. This is all we are already doing. The thing is that we have to do it more seriously. We should give more emphasis on that so that our students do not lack anywhere. They become confident, self-reliant student, youth. Now, third one is duration of the course. The undergraduate degree program will be of either 3 or 4 years duration with multiple exit options. In this period, 3 or 4 years. Graduation is of 3 years or 4 years. After completion of 1 year certificate will be issued. After completion of 2 years, a diploma will be issued. After completion of 3 years, degree will be awarded subject to minimum marks required to pass course has been obtained by the student concerned. Very interesting. And this particular para has been, as it is taken from my letter and has been incorporated in this education policy. I have got proof of this. I have given it, met to the HRD secretary. Sir, do it like this. And I have also said that in addition to this, if somebody wants some additional diploma, he should be given that also. So in this policy, they have given that at a time he can do 2 courses also. So if 1 year completed, we will issue 1 certificate. If 2 year completed, we will issue diploma in that particular field. If 3 year completed, we will issue degree. And if he wants to do furthermore, if he complete 4 years, we will issue honors degree. Honors degree. Now, as I was telling to Rajesh Bhatt, we have to design a course like this, where if 1 year is completed, it should look completed. But it should have a scope for further improvement. हमने कोर्स मटेरियल को ऐसे डिजाइन करना है कि जब पहला साल कंप्लीट हुआ तो एक तरीके से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो इनिशियल नॉलेज होता है पूरे कोर्स को 3 साल करने के बाद जो उसको एक इनिशियल मिनिमम बेयर मिनिमम जो उसको होना चाहिए वो 1 साल में कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हमने उसका कंस्ट्रक्शन करना है कि 1 साल हो गया तो बेसिक नॉलेज हो गया, फिर दूसरा साल हुआ तो आधे साल में तो बेसिक से थोड़ा और आगे बढ़ गया, एडवांस हो गया, और आधे साल हमने उसको ट्रेनिंग पे भेज दिया, 6 महीना उसको हमने ट्रेनिंग पे भेज दिया। ये मैं बता रहा हूं, हो सकता है हम लास्ट में ट्रेनिंग पे भेजे अगर हमें सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाने। आई एम गिविंग वन एग्जांपल लाइक दिस। तो फिर हमने 1 सेमेस्टर पढ़ाया, 1 सेमेस्टर ट्रेनिंग पे भेज दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और फिर हमने उसको डिप्लोमा दे दिया। जब हमारा डिप्लोमा होल्डर है तो उसको बेसिक नॉलेज है, थोड़ी एडवांस नॉलेज है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। वो उस डिप्लोमा के बेसिस पे कहीं पे भी नौकरी कर सकता है। उन्होंने 2 साल नौकरी करी और उसके बाद उसके मन में आया कि मैं ग्रेजुएशन कर देता हूं, तो फिर आ जाओ, फिर तीसरा साल कंप्लीट करो। फिर तीसरा साल आया, हमने फिर 6 महीने पढ़ाया उसको और 6 महीने फिर ट्रेनिंग पे भेज दिया। फिर हमने थोड़ा एडवांस पढ़ा दिया उसको और फिर हमने उसकी फिर ट्रेनिंग करा दी, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री दी। वो कहता मैं और आगे पढ़ूंगा, तो अब चौथे साल में हमने उसको जो पीजी का पोर्शन है
जो कि अब और एडवांस है उसको और पढ़ा दिया और उसको पूरा साल पढ़ा दिया पीजी का फर्स्ट ईयर पढ़ा दिया उसको और उसको फिर डिग्री दे दी। तो ये और ओपन एग्जिट और एंट्री सिस्टम है। 1 साल पूरा किया, 1 साल गैप कर लिया, कोई बात नहीं फिर आ जाओ। 2 साल गैप कर लिया, कोई बात नहीं फिर आ जाओ। दूसरा साल किया, फिर चला गया, फिर आया, फिर कर लो, कोई बात नहीं, कभी भी आओ, कभी भी चले जाओ। हर एक जो भी कोर्स करो, जो पेपर आप करोगे उसके मार्क्स हैं, उसकी क्रेडिट्स हैं, वो क्रेडिट आपके अकाउंट में है। अभी क्या है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर किया, फॉर एग्जांपल मैं बीए कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट ईयर किया और फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1-2 साल के बाद मुझे कोई नहीं कहे, वो कहेगा वापस फर्स्ट ईयर करवा। मैंने सेकेंड ईयर किया और छोड़ दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक मैं थर्ड ईयर कंप्लीट ना करूं और सारे एग्जाम पास ना करूं तब तक मुझे आगे नहीं पढ़े डिग्री नहीं मिलेगी। अब ये नहीं है, फर्स्ट ईयर किया सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर किया डिप्लोमा, थर्ड ईयर किया डिग्री और आगे बढ़ गया, फोर्थ ईयर किया तो ऑनर्स डिग्री। ये है इसको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत समझने में? प्रॉब्लम्स हो सकती है, वे क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, ठीक है ना? पर ये कॉन्सेप्ट ये है। 3 years degree course will be sufficient for appearing in any competitive exam। जो competitive exams होते हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए आरबी के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, कोई भी एग्जाम, बैंक के एग्जाम, उसके लिए 3 years degree sufficient है। So 3 years degree course will be sufficient for appearing in any competitive exam. It will be a full-fledged graduate degree. If opts to complete 4 years, then it will be research degree. मैं उसको ऑनर्स कह रहा था, ये कह रहे हैं रिसर्च डिग्री, एक ही बात, रिसर्च डिग्री मान लो। In the year, major area of study will be research on a particular subject. जो 4th year होगा, वो किसी न किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च उसको करनी पड़ेगी, उसको कोई प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, उस पर कोई थीसिस सबमिट करनी पड़ेगी, उसका वाइवा होगा और उसके फिर एग्जाम होंगे और उसके बाद उसको मिलेगी। यानी कि जो 4th ईयर है वो रिसर्च का ईयर है, एडवांसमेंट है। द पीजी, नाउ कम टू पीजी। द पीजी मास्टर डिग्री विल बी ऑफ 2 years फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन कोर्स इन 3 years, and PG program will be of 1 year who has completed 4 years graduation. Research program, there will be no MPhil program in any university. MPhil खत्म। अगर किसी ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया तो PG 2 साल का है, और किसी ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया, रिसर्च डिग्री ली है, तो उसका PG 1 साल का। क्लियर? Then for doing PhD program, one should either have master degree of 4 years, bachelor degree program। अगर कोई PhD करना चाहता है तो अगर उसने 4 साल का यूजी किया हुआ है तो उसको PG करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा PhD में जा सकता है। जिसने 4 साल का रिसर्च डिग्री प्रोग्राम किया है वो सीधा PhD में जा सकता है, उसको PG करने की जरूरत नहीं है। पर जिसने 3 साल का प्रोग्राम किया है उसको 2 साल का PG करना पड़ेगा, फिर PhD में जा पाएगा। इसका मतलब जिसने रिसर्च प्रोग्राम किया उसको 1 साल का फायदा हो गया। यू गॉट माय पॉइंट? भाई जिसने 3 साल का किया उसको बेचारे को 2 साल का PG करना पड़ेगा, तब वो PhD में जा सकता है। जिसने 4 साल का रिसर्च प्रोग्राम किया है वो सीधा PhD में चला जाएगा, उसको फिर PG करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब रिसर्च प्रोग्राम वही लोग करेंगे जिनको हायर स्टडीज में जाना है। जो 4 साल का ग्रेजुएशन वो करेगा, जिसको हायर स्टडीज में जाना है, जिसको आगे PhD करनी है, तो वो कहेगा मैं 4 साल का कर लेता हूं, मेरे को 1 साल का फायदा होगा।
The institutions may start integrated program of 5 years, which will be known as bachelor and master degree program. Institutions can start integrated program. जैसे हम बीटेक एमटेक करते हैं कि नहीं, बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कितने साल का होता है? 5 साल का। वही कॉन्सेप्ट है कि आप 4 साल की रिसर्च डिग्री, 1 साल का पीजी, 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब है सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। द टीचर्स विल बी फुली ट्रेन्ड टू एक्ट एज ए मेंटर्स एंड गाइड ऑफ द स्टूडेंट्स। The counseling of the students will be integral part of day-to-day teaching of the teachers. ये हायर एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है, जो हम 2008 से कर रहे हैं। The teachers will be fully trained to act as a mentors and guides of the students. The counseling of the students will be integral part of day-to-day teaching of the teachers. The students from socially and economically backward students will be encouraged to complete their higher education of their choice. Appropriate financial, moral, emotional support will be given. It's nothing new, अभी भी कर रहे हैं और आगे और इसको इंटेंसिव करेंगे. In order to successfully run ODL, an online education program, the courses, teaching modules, study materials and online lectures will be prepared, and it will be ensured that the quality of ODL and online educational program is nowhere compromised. यानी कि जो अभी तक कहते हैं ना कि ऑनलाइन कर लो या डिस्टेंस एजुकेशन कर लो, थोड़ा आराम से हो जाएगा, लेकिन अभी इस मैकेनिज्म को बहुत टफ करेंगे, ऑनलाइन को और डिस्टेंस मोड को। इसका जो कोर्स मटेरियल बनेगा, इसके जो एग्जामिनेशन के प्रोसेस होंगे ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे, जिससे कि बच्चा इसको लाइटली ना ले। ऑल एजुकेशनल प्रोग्राम्स आइदर ऑफलाइन, ऑनलाइन और ODI मोड विल बी स्टूडेंट्स फ्रेंडली एंड विल अचीव ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। स्टूडेंट सेंट्रिक सारे प्रोग्राम होंगे और इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी वाले होंगे। यानी कि क्या? कोर्स मटेरियल एंड टीचिंग, कोर्स मटेरियल एंड टीचिंग। फिर आ रहा है एक और, इंटरनेशनलाइजेशन। ऑल HEIs, all higher education institutions will make efforts to attract international students in the area of students like engineering, health sciences, computer and IT, and other Indian courses like astrology, yoga, Ayush, arts, music, history, culture, etc. We are doing this. We are already doing this. Now it is compulsory on every institution's part that they should attract the foreign students. We are already doing it. India will be promoted as a global study destination, providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as Vishwa Guru in the world. बिल्कुल क्लियर लिखा है इन्होंने कि एफोर्डेबल प्राइस पे हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और पूरे वर्ल्ड का हमें एजुकेशन हब बनना है, और हम इस लाइन पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारी सबसे कम फीस है इंटरनेशनल भी पूरी इंडिया में, और आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर विदेशी बच्चा किसी यूनिवर्सिटी के पास है तो वो अपने पास है। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान का इमिग्रेशन ऑफिस कह रहा है कि द बिगेस्ट नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर इन मेवाड़ यूनिवर्सिटी, और हम और आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो हम, ये हमारी फोरसाइटनेस है कि हम हायर एजुकेशन पॉलिसी में जो लिखा हुआ है वो उसके 5 साल पहले हम उसको लागू कर रहे हैं।
The collaboration with international universities in training and research, student exchange, faculty exchange and joint research will be promoted. We are already doing this. We have a lot of MOUs with foreign universities for student exchange, joint research and seminars, training, etc. Now last, the top 100 universities of the world will be invited to open their campuses in India. Similarly, the top higher education institution of India will be allowed to open their campuses overseas. Top 100 universities को यहाँ बुलाएंगे कैंपस खोलने के लिए. इसके लिए भी हमारा कैंपस बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए. तो इट कैन बी डन. ये कोई ये वो बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये होगा. अब हमारे साथ हो ये, उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा अपने, पर ये होगा. अभी अब जिस दक्षिणी राजस्थान में कितनी यूनिवर्सिटीज है, अगर कोई इधर दक्षिणी राजस्थान की तरफ आने की कोशिश करेगा कि भाई मुझे उस एरिया में डालना है, तो जितनी यूनिवर्सिटीज है उनमें देख लो अपने आप को, अपने को क्रेडिट कर दो कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुंचना है. बस इतनी सी चिंता है. मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी. The teachers will be fully trained to act as a mentors and guide of the students. The counseling of the students will be integral part of day-to-day teaching of the teachers. कोई पॉइंट फिर आगे. Regular training, counseling and updating knowledge of faculties. फिर आगे अपना faculty development program. All HEIs will be equipped with the basic infrastructure and facilities including clean drinking water, clean working toilets, blackboards, offices, libraries, labs and pleasant classrooms, spaces and campuses. Every classroom should have access to the latest educational technology that enables better learning experience. Teaching, counseling and research will be an integral part of duties of a teacher. Teaching, counseling and research. Teaching, counseling and research. Research means two type of research. One, writing of article published in international, national magazines, and another one, taking research project. And third one, taking consultancy. These are the 3 points, and these are the integral part of the duties of a teacher. यानी कि उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो सैलरी मिलता है, वो इन तीनों चीजों को मिला के मिलता है. अगर कोई सिर्फ पढ़ाता है तो वो अपनी सैलरी का 1/3 का हकदा, अगर 2 काम करता है तो हाफ का, और पूरा करता है तो पूरी सैलरी का हकदा. There will be an adequate student-teacher ratio so that no excessive workload is imposed on the teachers. I dealt it yesterday in very detail. Practice of two-way teaching theory and student-centric teaching methodology will be applied. Practice of two-way teaching theory. अपनी two-way teaching theory आप सबको पता है, लिखा है इसमें कि पहले पढ़ाओ फिर सुनो उनकी, और तभी परफेक्ट टीचिंग होगी. ये बात उन्होंने समझी है, लिखी है उसको. प्रैक्टिस ऑफ टू वे टीचिंग थ्योरी एंड स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मेथोडोलॉजी. टीचिंग मेथोडोलॉजी स्टूडेंट्स के हिसाब से टीचिंग की अपना तौर तरीका निजात करना, वो हम पहले से करते हैं और वही बात उसमें लिखी हुई है. Excellence in teaching, counseling and research will be properly awarded. जो ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है, टीचिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, रिसर्च बहुत अच्छे से कर रहा है, उसको बेस्ट टीचर अवार्ड मिलना चाहिए. A teacher education system in our country will be completely changed. The present structure and working of NCT will be closed. NCT बंद हो जाएगी बहुत जल्दी. In order to improve and
reach the levels of integrity and credibility required to restore the prestige of teaching profession, the regulatory system shall be empowered to take stringent action against substandard and dysfunctional teacher education institutions that do not meet basic educational criteria. After giving 1 year for improvement, by 2030, only educationally sound, multidisciplinary and integrated teacher education programs shall be allowed and rest will have to be closed. The 4-year integrated B.Ed program offered by multidisciplinary HEI will become the minimal degree qualification for school teachers by 2030. यानी कि 2030 के बाद टीचर बनने के लिए 4 साल का B.Ed इंटीग्रेटेड किया हुआ होना ही चाहिए. The 4-year integrated B.Ed will be a dual major holistic bachelor degree in education as well as specialized subject. एजुकेशन होगा, उसके साथ उसके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होंगे लाइक हिस्ट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा. Beyond the teaching of cutting-edge pedagogy, the teacher education will include grounding in sociology, history, science, psychology, early child care and education, foundational literacy and numeracy. Knowledge of India and its values, ethos, art, traditions and many more. The HEI is offering the 4-year integrated B.Ed may also run 2-year B.Ed for students who have already received a bachelor degree in specialized subject. 1-year B.Ed may also be offered for candidates who have received a 4-year undergraduate degree in a specialized subject. Scholarship for meritorious students will be established for the purpose of attracting outstanding candidates for 4-year and 2-year and 1-year B.Ed program. The first program of education will be 4-year program for B.Ed. Those students who has completed 3 years degree in a specialized subject, they can do B.Ed of 2 years, and those students who has completed 4 years degree program in a specialized subject can complete his B.Ed in 1 year. यानी कि B.Ed 4 साल का, B.Ed 2 साल का और B.Ed 1 साल का सब रहेगा. लेकिन B.Ed वालों को एक स्पेशल टीचिंग होगी हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की, हमारे इंडियन वैल्यूज की, इथोस की और हमारे महापुरुषों की जानकारी. लेकिन B.Ed 4 साल का, B.Ed 2 साल का, B.Ed 1 साल का सब रहेगा. जो 4 साल का रहेगा वो 12th के बाद का बच्चा जो अगर टीचिंग में आना चाहता है तो वो B.Ed 4 साल का करेगा. जो ग्रेजुएट बच्चा है जिसने स्पेशलाइज सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है वो 2 साल का B.Ed करेगा. जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है वो 1 साल का B.Ed करेगा. ये कंप्लीट हुआ. In order to maintain uniform standards for teacher education, the admission to pre-service teacher preparation program shall be through suitable subjects and aptitude tests conducted by National Testing Agency and shall be standardized keeping in view the linguistic and cultural diversity of the country. पूरे देश का B.Ed का एक ही एंट्रेंस होगा, पूरे देश भर का एक ही एंट्रेंस होगा और उसी एंट्रेंस से सबकी काउंसलिंग होगी. तो सब उसी हिसाब से अपने अपने कॉलेज की सीट भरेंगे. ऑल फ्रेश PhD एंट्रेंस irrespective of discipline, ये भी समझने की जरूरत है. ऑल फ्रेश PhD एंट्रेंस irrespective of discipline will be required to take credit subject during their doctoral training period. जो PhD का जो एंट्रेंस है यानी कि जो PhD स्कॉलर है उसको कंपल्सरीली टीचर एजुकेशन के लिए सारे टीचिंग मटेरियल तैयार करना, टीचिंग प्रैक्टिसेस बनाना और पढ़ाना कंपल्सरी होगा. जो टीचिंग प्रैक्टिस हम B.Ed के स्टूडेंट्स करते हैं, इसको ऐसे समझो, आजकल जो B.Ed का स्टूडेंट टीचिंग प्रैक्टिस करता है
यानी कि वो सारा कोर्स मटेरियल तैयार करता है, बड़े बड़े चार्ट बनाता है, फिर क्लासों में जाके पढ़ाता है, वही सभी पीएचडी स्टूडेंट को करना पड़ेगा और उनको स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहा हो। यानी कि आप अंदाज लगाइए कि स्कूलों में कितने टीचर्स हो जाएंगे। जो टीचर्स की कमी है स्कूलों में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर पीएचडी करने वाले को स्कूल में जाके पढ़ाना जरूरी होगा। और ये लिखा है कि पीएचडी प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटीज अराउंड द कंट्री विल बी रीओरिएंटेड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए सारे पीएचडी प्रोग्राम को रीओरिएंट करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए दिया जाएगा कि आप स्कूल में जाके पढ़ाइए, ताकि जो आसपास के स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की कमी खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। फिर आया वोकेशनल एजुकेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द 12th 5-year प्लान 2012 से 2017 estimated that only a very small percentage of Indian workforce in the age group of 19 to 24, less than 5% received formal vocational education, whereas in the countries such as USA the number is 52%, the Germany it is 75%, and South Korea it is high as 96%. These numbers only undermine the urgency of the need to hasten the spread of vocational education in India. वोकेशनल एजुकेशन का जो अभी आपको परसेंटेज पता लगा कि हमारे यहाँ 2017 तक 4% बच्चे ही वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, जबकि यूएसए में और जर्मनी में और साउथ कोरिया में कितने हाई परसेंटेज है। साउथ कोरिया में 96% बच्चा वोकेशनल एजुकेशन लेता है अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ। और ये सुझाव मैंने दिया जो इम्प्लीमेंट हुआ। मैंने कहा ये स्किल डेवलपमेंट और आप सब कर रहे हैं, सब पैसा पानी में जा रहा है। आप ग्रेजुएशन के साथ वोकेशनल एजुकेशन को कंपलसरी करिए। और उसमें मैंने कहा कि अगर 1 साल का वो वोकेशनल कोर्स करता है, 6 महीने का करता है तो उसको सर्टिफिकेट दीजिए, 1 साल का करता है तो एडवांस सर्टिफिकेट दीजिए, 2 साल का करता है तो डिप्लोमा दे दीजिए, और 3 साल का करता है तो उसको अलग से 1 डिग्री दे दीजिए। ये मैंने कहा था, वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये दिस पॉलिसी एम्स टू ओवरकम द सोशल स्टेटस hierarchy associated with vocational education and requires integration of vocational education program into mainstream education in all educational institutions in a phased manner, beginning with vocational exposure at early age in middle and secondary school. Quality vocational education will be integrated smoothly into higher education. It will ensure that every child learns at least one vocation and is exposed to several more. This could lead to emphasizing the dignity of labor and importance of various vocations involving Indian arts and artisanship. School में भी since class 8 the vocational education will start. So basic vocational education will be completed in 12th, and then final vocational education will be completed in higher education up to graduation. And this will improve the honor of the labor. By 2025, at least 50% of the learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education, for which a clear action plan with targets and timelines will be developed. 2025 तक हम 50% बच्चों में वोकेशनल एजुकेशन स्प्रेड करेंगे। ये हमारा हायर एजुकेशन पॉलिसी का फाइनल प्लान। नाउ वी कम टू रिसर्च। In order to promote and regulate research, National Research Foundation will be established. अब वो आ गया NRF. The primary activities of NRF will be to fund competitive, pre-reviewed grant proposals of all types across all disciplines.
to fund for research facilities at academic institutions, particularly at universities and colleges where research is currently in the nascent stage, through mentoring of such institutions. To fund for research facilities and academic institutions, particularly at universities and colleges where research is at initial stage, through mentoring of such institutions. Act as a coordinating agency between researchers and concerned department of government and industry with respect to identification of area of research and also updating the latest development in the research took place, recognizing outstanding research progresses. These are the work of Research Foundation. Now, regulatory system of higher education. In order to regulate the entire higher education system except law and medicine, one supreme authority known as Higher Education Commission of India will be constituted. अभी ये UGC ये काम कर रही है, लेकिन UGC की जगह एक UGC को रिप्लेस करके वहां पे बनेगा एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. वो रेगुलेट करेगा सबको. और अंडर दिस कमीशन देयर विल बी 4 काउंसिल्स. इस कमीशन के अंदर 4 काउंसिल होगी. पहली काउंसिल होगी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल. The council will regulate higher education sector including teacher education but excluding legal and medical education. Legal education क्योंकि वो बार काउंसिल का एक्ट अलग है वो, और MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अलग. इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी एजुकेशन को यह नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल रेगुलेट करेगी. The council will work on the principle of light but tight regulations and compliances. Good governance will be ensured through online and offline public disclosures of all finances, audit, procedures, infrastructures, faculties, non-teaching staff, number of students, courses, placement of the students by all HIs. अब यहाँ पर जो है इन्होंने दिया है कि इसमें चेकिंग कम, कंप्लाइंसेस ज़्यादा, यानी कि इंस्पेक्शन कम, और आपको स्वतः ही अपनी जो बैलेंस शीट बनती है वो बैलेंस शीट आप पब्लिक डोमेन में डालो. आपके पास जो टोटल फीस आई वो पब्लिक डोमेन में डालो. आपने फैकल्टीज को क्या क्या सैलरीज दी वो पब्लिक डोमेन में डालो. तो इस तरीके से वो ऐसी कंपल्सरी कंप्लाइंसेस करवा रहे हैं कि आपकी पूरी की पूरी सारी की सारी चीज ट्रांसपेरेंट हो जाए और सब लोग देख सके, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब देख सके कि आप क्या हो. अभी आप नेट में भी देख रहे हो जो इंस्पेक्शन का जो मार्क्स है वो 25% है. 75% मार्क्स तो आपके डिस्क्लोजर के हैं जो आपको खुद ही रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और वो उसी को देखकर वो मार्क्स देते हैं. वो कहते हैं आप ही भरो, आप ही बताओ आप कैसे हो, और आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे आप कहाँ हो. सिमिलरली ये कॉम्प्लाइंसेस पे ज्यादा जोर है. अब चूंकि सब इंटरनेट की दुनिया हो गई, हर चीज सामने दिखती है. आपको किसी की बैलेंस शीट निकालनी है, किसी की हिस्ट्री निकालनी है, तो आप गूगल पे जाओ, उसका नाम भरो, वो सब चीज सामने आ जाएगी. लाइक दैट कॉम्प्लाइंसेस पे ज्यादा जोर होगा, इंस्पेक्शन पे कम जोर होगा. फिर ऑल द इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी प्लेस्ड ऑन पब्लिक वेबसाइट मेंटेन्ड बाय NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल की जो वेबसाइट होगी उस पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी. Complaints and grievances from the stakeholders and others arising out of such disclosure will be monitored by NHERC in coordination with the concerned HIs. आपने उसकी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन डाल दी. अब कोई कंप्लेंट आई, कोई ग्रीवेंसेज आई, तो वो आपको रेफर करेगा और रेफर करके अपने को जवाब देना पड़ेगा, वो डिस्पोजल होगा उसका. तो अब हर चीज ट्रांसपेरेंट हो रही है धीरे धीरे. फिर है दूसरी जो है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, NAC. The council will grant accreditation to HIs based on their infrastructure, courses, curriculums,
teaching pedagogy, number of teachers appointed and their qualification, research work of the teachers and institutions etc. ये नैक करेगी, ये आपको ग्रेडिंग देगी. इस ग्रेडिंग के बेसिस पे अगर आप कॉलेज है तो आप यूनिवर्सिटी बन जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी है, टीचिंग यूनिवर्सिटी है तो आप रिसर्च यूनिवर्सिटी बन जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड गिवन बाय दिस काउंसिल, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल. The promotion of HEIs will be through grading of NAC. It would be a continuous process of upgrading HEIs till they reach to accepted benchmarks. ये continuous process है. आपको आज B मिला, आपको C मिला, फिर B मिला, फिर A मिला, फिर A+ मिला. तो ये continuous है, जैसे हम लोग NAC में चल रहे हैं अभी. तो ये continuous process है, वो चलता रहेगा. फिर तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल. The Higher Education Grant Council will carry out funding and financing of higher education based on transparent criteria, including IDPs prepared by the institutions and the progress made on their implementation. The HEGC will be entrusted with the disbursement of scholarship and development of funds for launching new focus areas and expanding quality program offering at HEIs across discipline and fields. ये ग्रांट देगी आपको, वो देख करके आपने आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने फाइल की उसको आप क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, कैसे नए नए एरिया में आप एजुकेशन कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको ग्रांट देगी. फिर है जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये चौथी ब्रांच है. जनरल एजुकेशन काउंसिल. जनरल एजुकेशन काउंसिल which will frame expected learning outcomes for higher education programs, also referred to as graduate attributes. A national higher education qualification framework will be formulated by GEC and it shall be in the line with National Skill Qualification Framework NSQF to ease the integration of vocational education into higher education. Higher education qualification leading to a degree, diploma, certificate shall be described by NHEQF in terms of such learning outcomes. In addition, the GEC shall set up facilitative norms for issues such as credit transfer, equivalence, etc. Through the NHEQF, the GEC will be mandated to identify specific skills the students must acquire during their academic programs, which they aim of preparing well-rounded learners with 21st century skills. The professional councils such as Indian Council for Agriculture ICAR, Veterinary Council VCI, National Council for Teacher Education NCT, Council of Architecture, National Council for Vocational Education and Trade NCVT, etc. will act as a professional standard setting bodies. ये जितनी councils अभी बनी हुई है, except BCI और MCI, ये सारी की सारी इस जनरल एजुकेशन काउंसिल में मेंबर बन जाएंगे और अपने अपने एरिया के बेस्ट कैरिकुलम डिजाइन करके देगी. कैरिकुलम डिजाइन करेगी, उसका फ्रेमवर्क बनाएगी और उसके एक्सपेक्टेशंस बनाएगी कि इस कोर्स को करने के बाद बच्चे में क्या क्या स्किल्स डेवलप हो जानी चाहिए. इसके साथ साथ जो वोकेशनल प्रोग्राम अब डिग्री प्रोग्राम के साथ चलेंगे तो उन वोकेशनल प्रोग्राम को डिग्री प्रोग्राम के साथ कैसे मिलाकर चलना है उसका फ्रेमवर्क बना के देंगे. ये सब एडवाइजरी काउंसिल होगी, इनके पास कोई इंस्पेक्शन की अथॉरिटी नहीं होगी जो अभी तक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द higher education policy. Now what is the conclusion of it? The conclusion is the national education policy is a vast document ranging from page 100 to 200, from page 1 to 200. It is very difficult to conclude such a detailed document. However, the main points can be summarized in the following manner. First, under this policy, the aim is that India must have an education system by which should be 2040 that school that second to none
with equitable access to the highest quality of education for all learners, regardless of social or economic background. ये कहता है एजुकेशन पॉलिसी कि 2040 तक हम इंडिया वर्ल्ड का सेकंड टू नन एजुकेशन सिस्टम बन जाएगा। हम ये तो नहीं क्लेम करते कि हम फर्स्ट हो जाएंगे, लेकिन हम सेकंड टू नन होंगे, यानी कि फर्स्ट के इक्विवेलेंट होंगे। The fundamental principles that will guide both the education system at large as well as the individual institutions within it are the fundamental principles recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student. क्या कह रहे हैं, जो मैं रोज कहता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटी है, उस क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करना, उसको बाहर निकालना, उसको डेवलप करना। By sensitizing teachers as well as parents to produce each student's holistic development in both academic and non-academic space, उसका संपूर्ण विकास करना है। The highest priority will be given to achieving foundational literacy and numeracy by all students by grade 3, यानी कि क्लास 3 में आते आते बच्चे को न्यूमेरिकल और फाउंडेशनल लिटरेसी आ जानी चाहिए। ये स्कूल एजुकेशन है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड टू लर्नर्स हैव द एबिलिटी टू चूज देयर लर्निंग सब्जेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स एंड देयरबाय चूजिंग देयर ओन पाथ इन लाइफ एज पर देयर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। जो फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है, जो मल्टीपल चॉइस है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसको क्यों किया गया कि बच्चे का डेवलपमेंट उसकी रुचि के हिसाब से होना चाहिए। जो उसकी अंदर की फीलिंग है, वो अंदर की फीलिंग के हिसाब से वो पढ़े और वो अपनी स्किल को डेवलप करे। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। अब ये जो आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, साइंस साइड, इंजीनियरिंग साइड, ये सब डिफरेंस खत्म, सब एक हो गए, इंक्लूडिंग वोकेशनल। आप मर्जी चाहे तो करो, जो मन में आ रहा है वो करो। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस द साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड स्कूल्स फॉर ए मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ल्ड टू इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नॉलेज। Emphasis on conceptual understanding rather than rote learning and learning for exams. ये बड़ा important है। अब जो emphasis है वो concept clear करने पर है, रट्टाफिकेशन पे नहीं है, और एग्जाम्स के लिए तैयारी कराने के लिए नहीं। 90% स्टूडेंट एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है और एग्जाम पास करते ही भूल जाता है क्या पढ़ा। तो वो नहीं, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें एनालिटिकल पावर डेवलप होनी चाहिए, उसमें लॉजिकल पावर डेवलप होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, उसका दिमाग खुलना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। एथिकल, ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक empathy, respect for others, cleanness, courtesy, democratic spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality and justice. These are the points which should be learned by the student in the process of his education. Then promoting multilingualism and the power of language in teaching and learning. Life skills such as communication, cooperation, teamwork and flexibility. Focus on regular formative assessment for learning rather than summative assessment, and that encourages today's coaching culture. What they want, coaching culture खत्म होनी चाहिए. Extensive use of technology in training, in teaching and learning, removing language barriers, increasing access for Divyang students and educational planning and management. Respect for diversity and respect for the local
context in all curriculum, pedagogy and policy. Always keep in mind that education is a concrete subject. Full quality, full equity and inclusion is the salient feature for all educational decisions to ensure that all students can flourish in the education system. Synergy in curriculum across the level of education from early childhood care and education to school education to higher education. Teachers and faculty as the heart of the learning process. Their recruitment, continuous professional development, positive working environment and service conditions. A light but tight regulatory framework to ensure integrity, transparency and resource efficiency of educational system. Through audit and public disclosure while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through autonomy, good governance and empowerment. Outstanding research as a core requisite for outstanding education and development. Continuous review of progress based on sustained research and regular assessment by educational experts. A root bends and pride in India and its rich, diverse, ancient and modern culture and knowledge system and traditions. Education is a public service. Access to quality education must be considered a basic right of every child. Substantial investment in a strong, vibrant public education system as well as the encouragement and facilitation of true philanthropic, private and community participation. This is all the objects of this higher education policy and we can summarize as conclusion. Now we come to the suggestions. After going through this and having experience of 20 years working in higher education, I have got some suggestions which I am putting forward to the government, that which I have dealt yesterday also. I just repeat them. After completing 12th class, every student should go for compulsory military training and serve nation for 2 years without any remuneration, either in army or in armed forces like BSF, ITBP, CRPF, NDRF, etc., not in NSS or NCC. This is my firm view. The basic requirement of our country nowadays is the physical, mental development of our young generation and infusing discipline in it, a sense of discipline, sense of patriotism, sense of responsibility and sense of doing hard work. This is very, very important, and this can only be done through a 2 years compulsory rigorous training of that student, and then he should go for higher education or anything else. By doing this, we will get young, at 12, after passing 12 means 17 years old boy or girl, very vibrant, very young, very energetic. They will serve the country for 2 years. See, just imagine if they go on everywhere, they will do wonders without any remuneration. How much manpower we will get. They will do everything which is pending for years together because of we don't have that workforce. Everything will be done. Everywhere they can be placed. And after that they come, when they will see the wastage of taxpayers' money, and they will try to stop it by their own hands, by their own deeds. They will realize when they will come to practical life.
So this is a national wastage we should not do. When they will die for the country, their fellow person will feel, वो मर गया मेरा दोस्त, हमें देश के लिए क्या करना है वो पता लगेगा। बहुत जरूरी है ये काम। मैं तो दूंगा सजेशन, पर आगे क्या होता है भगवान जानता है, लेकिन ये होना चाहिए। बहुत अच्छा, कई कंट्रीज में ये लागू होता है। There should be compulsory moral education paper up to graduation level, which should teach morality, ethics, nationalism, freedom movement of India, national heroes, saints, educationists, scientists, etc. ये कंपल्सरी पेपर होना चाहिए और उसमें कम से कम 80% मार्क्स हो, तभी वो क्वालिफाई माना जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एस्टैब्लिश ए नेशनल एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो मैंने कल डिटेल में बताया कि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी देनी है तो ऑटोनॉमी तभी होगी जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। वास्तव में इस एजुकेशन को ऑटोनॉमस बनाना है, टीचर्स का प्राइड रिस्टोर करना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है। एक सिंपल थ्योरी है कि आप एक नेशनल एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना दीजिए। अगर इंस्टीट्यूशन को भी पैसा चाहिए वो उससे ले ले, बच्चों को भी पैसा चाहिए वो उससे ले ले और वापस दे दे। एक लाख करोड़ रुपया उसमें डाल दीजिए, आप हर साल लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और उसके बाद आप एक रोटेशन चला दीजिए कि भाई आपको लेना है और वापस देना है। आप देखिए, लाख करोड़ रुपया आप देंगे तो 70,000 करोड़ तो आ ही जाएगा, 30,000 करोड़ थोड़ा सा बाद में आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक सिस्टम चलता रहेगा। तो अगले साल आपको 30,000 करोड़ रुपए तो डालना रहा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फंड अपने आप में इतना जनरेट करेगा कि सरकार को कुछ डालने की जरूरत नहीं होगी। क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों जगह इंश्योर हो जाएगी। टीचर्स का प्राइड भी रिस्टोर हो जाएगा, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। बहुत अच्छा ये एक सिस्टम है जो मेरा कई सालों से मेरे दिमाग में था। मैंने कहा इस पे मौका आया, मैं इसको। फिर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन ऑप्शन टू रन द इंस्टीट्यूशन फॉर प्रॉफिट और चैरिटी। जो चैरिटी में चलाना चाहता है वो चैरिटी में चलाए, जो प्रॉफिट में चलाना चाहता है प्रॉफिट में चलाए और टैक्स दे गवर्नमेंट को। आत्मनिर्भर होने के लिए हमें वही पुराना फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि हमारी टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो, हमारी टीचिंग लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो, हमारी काउंसलिंग बहुत अच्छी हो, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो और हमारे प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, जिसके लिए मैं कहता हूँ बेस्ट टीचिंग, बेस्ट लर्निंग, बेस्ट काउंसलिंग, बेस्ट प्लेसमेंट एंड बेस्ट रिसर्च। अगर हम धीरे धीरे उस पे आगे बढ़ जाएंगे तो हम तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ये बात पक्की। और अगर हमने, जो मैंने पहले क्राइटेरिया बताया कि हमने यहाँ अपने आप को ठीक कर लिया, तो कोई ना कोई बाहर से आ जाएगा जो हमारे साथ हाथ मिला लेगा, तो हमारी फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपको। आप जब कहीं गाँव में काउंसलिंग के लिए जाओगे, स्कूलों में काउंसलिंग के लिए जाओगे, कहीं रिश्तेदारी में जाओगे, तो लोग आपको हायर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछेंगे। तब आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि हाँ मैंने पूरी पढ़ी हुई है, इसके ये फीचर्स हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जब अब इसको आप पढ़ लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसमें जीना है। ये हमारी लाइफ का पार्ट बनेगी। इसको जितना जल्दी समझेंगे और इतना जल्दी अच्छे से समझेंगे, उतना जल्दी हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।